शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज महाराजा हरि सिंह। ओके, सो महाराजा हरि सिंह जो थे ही वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट महाराजा थे महाराजा हरि सिंह। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दैट इज महाराजा प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह की डेथ जो है 1925 में हुई। ही हैड नो सन, सो ही वाज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू दैट इज महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो है ही वाज वेरी हैंडसम पर्सन, ही वाज वेल एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन थे ये Maharaja Hari Singh, and of course he was very very popular among his subject. So this is the part first of Maharaja Hari Singh, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जो है इनका जो टाइम पीरियड जो है इट इज फुल ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ओके, सो ये फर्स्ट लेक्चर है महाराजा हरि सिंह पे। इस पे हम जस्ट डिस्कस करेंगे महाराजा हरि सिंह की कंट्रीब्यूशन क्या है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो मेन इवेंट क्या है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या, ही वाज अ नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, ये हमने अभी बताया। During the early years of his reign, he was very very popular among his subject and was held in a very high esteem. जब तक महाराजा नहीं बने थे 1925 तक, तो सारे लोग जो है महाराजा हरि सिंह से बहुत प्यार करते थे। ही वॉज इजिली accessible, he was very liberal, he was very tolerant. Although he was liberal later on also, but later on जो है महाराजा he became महाराजा. So being Maharaja, he had to take some important, sometime very unpopular subject. So इनके टाइम पीरियड में 90s 20s के लेटर हाफ में और 1930s में 1940s में सो मूवमेंट वाज आल्सो स्टार्टेड। ओके, फॉर दैट इज नोन एज दैट इज द पॉपुलर मूवमेंट। ओके, सो बट हिज autocratic temperament, the evil influence of his corrupt and inefficient official and British excitement to communal element gave rise to popular discontent. Okay, although he was very very popular in his initial days, there was a rise of national movement in the state and great political unrest in Jammu and Kashmir, स्पेशली जो है वैली में जो है काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट हुई। और जिनका लीडर कौन था, जिनके लीडर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, on October 1947 the state acceded to India. Maharaja Hari Singh went in exile in June 1948 and passed away at Bombay in April 26 1961। तो महाराजा हरी सिंह जो है 1947 और 48 में जो है ही लेफ्ट जम्मू एंड ही वेंट टू बॉम्बे। बॉम्बे में भी इनका अपना घर था एंड वेयर ही डाइड, ही नेवर कम बैक। ओके, सो दैट इज ये हम लेटर दूसरी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम यही डिस्कस करेंगे इनके इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट जो हैं वो चीजें क्या क्या हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So this is our Maharaja Hari Singh and she is the beautiful wife of Maharaja Hari Singh. महाराजा हरि सिंह जो है उस दौर के बहुत बड़ी रियासत, सबसे जम्मू कश्मीर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ। देर वाज मोर देन 65 स्टेट्स। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है सबसे बड़ी स्टेटों में आता था। महाराजा हरि सिंह जो है ही वाज वेरी वेरी पॉपुलर, ही वाज वेरी वेरी पावरफुल, नो डाउट अबाउट दैट। ही वाज वेरी पावरफुल, वेरी पॉपुलर। एंड ऑफ कोर्स महाराजा हरि सिंह जो है ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड प्रिंसली स्टेट्स रूलर एट दैट। उस टाइम पीरियड में प्रिंसली स्टेट रूल के सबसे एक पढ़े लिखे रूलर्स में जो है महाराजा हरि सिंह जो है वो आते थे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। महाराजा, सो दिस इज महाराजा हरि सिंह। वेल एजुकेटेड, बिल्कुल ऐसे एजुकेटेड टाइप का आदमी था ये। ठीक है, पढ़े लिखे आदमी थे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जब सबसे पहले मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बाद में मूवमेंट स्टार्ट हुई 1934 में जो है, because of Sheikh Mohammed Abdullah, because of the impact of national movement, because of the impact of Indian National Congress, because of the interference of British government, and of course due to his political wisdom also, there was a movement was going on for the participation of the masses or for the to build up the popular government in the state. So there was a movement that was known as Praja Parishad movement. So उसके चलते क्या हुआ, 1934 में a legislative assembly called Praja Parishad was established. It consists of 75 members and 33 of them being elected on limited franchise. The number of elected members जो हैं बाद में जो है वो increase हुए from 33 to 40. Changes were also introduced in the formation of municipal committees. Initially, panchayats were given very few rights. Petty cases, they were decided only petty cases, but later on, जो है, they were also involved in other schemes also. Hari Singh also reformed judicial system. He enacted the Jammu and Kashmir High Court Constitution. Sorry, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया. That is High Court. Okay.
he enacted Jammu Kashmir High Court Constitution in 1928. A High Court comprising a Chief Justice and ordinary judges were also established. The High Court, with the sanction of Maharaja, would make rules regarding working of subordinate courts. But at the end of the day, Maharaja remained the fountainhead of the judicial power. Judicial power का overall incharge जो है वो महाराजा ही होते थे. Okay. Okay, let me okay. So यहाँ तक education reforms की बात है. He was very visionary. He launched a vigorous campaign against the illiteracy in the state. He passed the Primary Education Act, Compulsory Primary Education Act. It made compulsory for the children living in the state to receive primary education at the time of Maharaja accession. जब महाराजा बने थे 25 में there was 700 schools, but during the 1945 there were more than 20,000 schools. Child labor was banned. Maharaja appointed director of education. This post was generally held by the eminent educationist. The Maharaja took a keen interest in the education of Muslims. He appointed special teachers to teach Arabic and the Muslim theology, that is the Muslim religion. Higher education also received Maharaja attention to encourage the student to receive college education. In 1942, SP College at Srinagar was bifurcated into two colleges. One was for the technical and other for the academic purposes. Okay, so Maharaja sanctioned 500 scholarship for poor Muslims and other needy children. Special inspectors of Muslim education were also appointed to see that these measures were implemented effectively. Two more colleges were opened, one at Poonch and another Mirpur. So Poonch डिग्री कॉलेज जो है वो आज की डेट में स्टेट का सबसे यूनियन टेरिटरी का सबसे पुराने कॉलेजेस में जो है वो आपके आते हैं. ओके. Of course, despite his limited financial sources, Maharaja made earnest efforts to spread modern education throughout the state. Okay, so he took a lot of efforts. Okay, then economic reforms. Maharaja gave special attention to the promotion of agriculture in the state. He passed Agriculture Relief Act, by which the debater, okay, could bring the creditor to the law for the settlement of the accounts. These measures or these steps saved the peasant from the rapacity of the money lenders. Money lenders के चंगुल से बचाया गया. Then Land Alienation Act of 1928 forbade the transfer of agricultural land to the non-agriculturists. The peasants were given propertiers rights and were exempted from the payment of such as Nazrana, Malikiana. ये जो है फालतू के टैक्सेस होते थे. The Consolidation of Holding Act of 1940 did much ameliorate the lot of zamindars to improve the breed of livestock. A large number of bulls of Sindhi and Dani breeds were imported and distributed among the peasants of the selected villages. The state share of land revenue was revised 30% of the gross produce. The system, बेगार system जो है, जो बंधुआ मजदूरी है, forced labor है, it was completely abolished by this man. He was very very visionary. Okay, लेकिन आज हम उसका एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे. We are discussing only the one part. In 1938, Jammu Kashmir Bank was established with its headquarter at Srinagar. Later on जो है अलग अलग stages, अलग अलग जगह पे भी branches खुली गई. Important places of in the state linked with the telegraph, telephone and wireless services. All these measures gave great fillip to trade and industries and increased industrial production. Okay. सो आज की डेट में भी देखा जाए तो जो आपका जम्मू कश्मीर जो आपका बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? It was established by, that is महाराजा हरि सिंह. हरि सिंह ने जो है इसको एस्टैब्लिश किया 1938 में. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको अगर पेपर हुआ तो. ओके. देन द फोर्थ इज दैट इज सोशल रिफॉर्म्स. सोशल रिफॉर्म्स में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, दैट इज upliftment of the depressed classes, prohibition of child marriages and promotion of widow remarriage, suppression of immoral trafficking in women and suppression of infanticide, provision of medical facilities, religious toleration and other social reforms that has been taken by none other than Maharaja Hari Singh. Okay, so depressed classes के लिए इन्होंने क्या किया? ऑफ कोर्स इंडिया में डिप्रेस क्लासेस की कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा पैथेटिक है आज की डेट में भी. महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में हरिजन्स वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल. इट इज वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम. देयर चिल्ड्रंस वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स एंड कुड नॉट सिट अलोंग विद द चिल्ड्रन ऑफ द अपर क्लासेस. The Maharaja was determined to end this discriminatory treatment of the depressed classes. He announced that all public wells, tanks, temples, schools shall be open to all. He issued orders to the district officer to see that these instructions were strictly followed and those who violated these orders were severely dealt with. On October 31st, 1932, Maharaja Hari Singh declared Harijans
would be allowed to enter the worship of all temples. The head pujari of Raghunath temple, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने रिजाइन कर दिया. उसने बोला हरिजन अगर टेम्पल्स के अंडर आएंगे तो मैं तो बिल्कुल काम करने वाला नहीं हूँ. तो महाराजा हरि सिंह ने बोला ओके बाय बाय टाटा, आई विल एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन बट आई एम नॉट बो डाउन इन फ्रंट ऑफ योर ईगो और इन फ्रंट ऑफ योर इमोशनल सेंटिमेंट्स. ओके, सो महाराजा हरि सिंह रिफ्यूज टू विड्रॉ द प्रोक्लेमेशन. उसने बोला सबका मालिक एक, बनाने वाला एक, हम सब एक, मंदिर एक, एक रिलीजन जो है वो सारे आप मंदिर के अंदर आ सकते हो. सो बीइंग अ रूलर he has no religion, so he was very very tolerant in that context. So Maharaja Hari Singh improved the condition of the depressed classes. He granted special scholarship and accorded preferential treatment to the depressed classes in government jobs. Seats were reserved for them both in local bodies and later on प्रजा परिषद when it came into existence. प्रजा परिषद जो है 1934 में आई थी, तो ये आप याद रखिएगा. Okay, so prohibition of child marriage and encouraged widow marriage. The evil custom of child marriage was very common in the valley, particularly among the Hindus. The Maharaja passed the infant marriage prevention regulation by which 18 साल और 14 साल की एज जो है वो डिसाइड की गई. द रेगुलेशन आल्सो फॉरबिड इनकम्पेटिबल मैरिजेस. इनकम्पेटिबल मैरिजेस का मतलब है जो आदमी बूढ़ा आदमी है 55 का, तो वो किसी 20 साल या 15 साल की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता. सो इनकम्पेटिबल मैरिजेस वर इक्वली discarded. Okay, and of course to protect the weak and innocent against the exploitation. Hari Singh was a great supporter of widow remarriage and severely opposed forced widowhood. He passed the law and allowed the widows to remarry without any restrictions. But ये कितनी चीजें लागू होती हैं, that is a matter of debate or matter of research. But being a ruler of the state, he passed this regulation. तो उसने जो है वो रेगुलेशन को जो है वो पास कर दी. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम इन्फेंटिसाइड की बात करते हैं तो इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड was more common among the ruling class or among the Rajputs of Jammu and Kashmir, and it is clearly written. Okay, in 1934, Maharaja passed the suppression of immoral trafficking of women. In women regulation, the act ordered the closure of brothel. It declared the public prostitution was a sin, immoral, and a grave offense. Though Maharaja determined to suppress immoral trafficking among the women, but the authorities did not enforce law strictly. The Maharaja took some other measures to ameliorate the lot of unfortunate and outcast women and to absorb them in a respectable families. To rehabilitate some of them, they were given training in various handicraft to make them economically self-reliant. Again, the intention was good, but implementation was, of course, very poor. Okay, so Maharaja decided to put down with a strong hand the most deeply rooted evil of female infanticide, which was prevailed among the Hindus, especially among the Rajput. The female children were victims of gender bias and were considered inferior to the male children. Why it was so? Because of the economy. Okay, so Maharaja was anxious to put an end to this obnoxious and horrible practice of infanticide. So he proclaimed that every female child born in a Rajput family, her parents would be granted an acre of land and the financial help at a time of her marriage. He also established a state fund called Dhan Devi Memorial Fund. Dhan Devi Memorial Fund for this purpose. This measure greatly discouraged this inhuman practice. Okay, so again, this is a very very important step in this direction. Then he also improved the medical facilities and he was also known for the religious toleration. So Maharaja reorganized whole medical department. He established Central Medical Hospital at Jammu at the cost of 8 lakh. At that time it was a big amount, and another at Srinagar at the cost of 30 lakh rupees. Srinagar wala महंगा बना था. Maharaja also opened about 100 dispensaries at various places in the state. Many students were granted scholarship for receiving medical education in foreign countries, and on their return, they were appointed in a state medical services. Then schemes were formulated for the eradication of epidemics, plague in Jammu, that is cholera in Kashmir. These measures eradicated disease from the valley completely. Maharaja Hari Singh was a liberal and a tolerant ruler. He gave complete religious freedom to his subject. He used to participate in the religious festival of people of all faith and respected their religious sentiments. He was the most liberal of all native Indian states. Okay, this practice of participating in each other religious festivals still
Then other social reforms that was taken by Maharaja Hari Singh. In 1941, Maharaja enacted a law by which the practice of polyandry was made a crime. This Maharaja also discouraged polygamy among the Hindus, लेकिन रूल नहीं बना था. In Act of 1940 laid down none would accept rum, a certain amount of cash, goods, land, cattle, which was given by side of bridegroom to the bride side at a time of betrothal of or marriage. Matlab, it was just kind of a dowry system, you can say that. The practice of rum was declared illegal and punishable under the law. Then juvenile smoking regulation was enacted to forbid the children from smoking. The act was forbade any boy below the age of 16 to sell tobacco at any farm. कंज्यूम भी नहीं कर सकता था. Okay. Then Maharaja, you can say that Maharaja disliked caste prejudices among Rajput. It was very, very common. Still, it is there. He proclaimed that there would be no caste distinction between one Rajput clan and another one, so far as social status and social intercourse were concerned. So this is महाराजा हरि सिंह. ओके, तो अभी तक हमने महाराजा हरि सिंह के बारे में क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1934, दैट इज प्रजा परिषद. सो प्रजा परिषद पे अलग से डिस्कस करेंगे. ओके, देन उसके बाद हमने डिस्कस किया जुडिशियल रिफॉर्म डिस्कस किया. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म में व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस सेवरल काइंड्स ऑफ, यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट जो है जेके बैंक जो है उन्होंने बनाया 1938 में. ओके, 1938 में जे एंड के बैंक जो है वो महाराजा हरि सिंह ने बनाया. देन एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद आपका आ गया सोशल रिफॉर्म्स. सोशल रिफॉर्म्स में बड़े सारे काम किए. सोशल रिफॉर्म्स में कास्ट के खिलाफ काम किया, फीमेल एजुकेशन के बारे में काम किया, मुस्लिम्स एजुकेशन के बारे में काम किया. देन उसके बाद डाउरी सिस्टम को जो है वो रिमूव किया, रिलीजियस टॉलरेशन दिखाई. सो ऑल दिस वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक महाराजा हरि सिंह की बात थी. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की वो है महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में व्हाट हैपन. महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में देयर वाज राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट. ओके, पॉपुलर मूवमेंट का राइज हुआ महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड में. सो देर आर टू मैनी थिंग्स वर रिस्पॉन्सिबल. नाउ वी सी इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी. ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी थी. 1920s में महात्मा गांधी जो है ही वॉज फुल फ्लेज्ड बिकम द रूलर ऑफ, यू कैन लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट. सो 1920s जो है स्टेट में भी अगर 1920s देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर पे भी उसका असर पड़ा. ओके, तो यहाँ पे राइज हुआ. देर वॉज वन मैन दैट वॉज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का राइज हुआ तो देर वॉज अ प्रॉब्लम, यू कैन से दैट, और देर वॉज अ डिमांड्स, यू कैन से दैट was were put on in front of the Sheikh Mohammed Abdullah. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द मैन दैट इज द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. ही क्रिएटेड ट्रबल्स फॉर हरि सिंह. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दैट टाइम पीरियड. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पहले एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई. मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया. शेख अब्दुल्ला जो है ही वॉज ग्रेजुएटेड एंड पोस्ट ग्रेजुएटेड रादर देन from Aligarh Muslim University. He saw that there was a discrimination on the part of Maharaja vis-a-vis to the people of Jammu and Kashmir. He started the movement that was known as the Popular Movement. Okay, and he demanded the more participation of the people of Jammu and Kashmir in the government, in the government, in the legislation. And these factors were responsible later on जो है शेख अब्दुल्ला जो है he emerged as one of the biggest leader. Okay, and what happened in 1947 when India got independence. So there was Mountbatten plan and states were, you can see that they were given the chance to either to join India or to join Pakistan. And the state of Jammu and Kashmir जो है it acceded with the state of with India state. इंडिया स्टेट के साथ जो है उन्होंने ज्वाइन किया. एंड देयर वाज अ सेशन. ये हम लेटर ऑन में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. यू आर वाचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल. हिस्ट्री फॉक्स चैनल जो है आप देख रहे हो. दिस इज मी कश्यप शर्मा. एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एटलीस्ट विद 100 people.